Hello and welcome everyone. A very good evening to each one of you listening to me right now. Hi, I hope all of you can clearly hear my voice. My name is Khushwant Fatnani, your educator, your mentor, coach for HSC class 11th and class 12th on the Unacademy platform. We are beginning with the session for the day. So, I hope you all can clearly hear my voice as well as clearly see the screen. A quick check. If yes, can you all give me a quick hi sir, yes sir, we can clearly hear you. Any comments would do. Let me go through the live comment section and see the link. Alright, I can see that it's working fine. You all can clearly see me. Hello. So, right, let's begin with the session for the day. Free body diagrams, hai na? Now, okay, let's get going and let's check this session one by one. Okay, chalo. Now, let's get going. Alright, I hope you all can see the screen. Right, let's begin then. Okay. Cool. Okay. Now, let's begin with the session. So this is a new software that I'm using for you all today, so just exploring it a bit meanwhile. Okay, so this is a quick insight into the Maharashtra State Board Unacademy quick one poster for HSC class 11th and HSC class 12th. Here is a quick insight into my bio. My name is Khushwant Fatnani, right? Your educator, mentor and coach for HSC class 11th and HSC class 12th. My code is written here on the screen, KFMAHA, Khushwant Fatnani Maharashtra. On using this code, you get a 10% discount on the Unacademy Plus subscription. Unacademy Plus subscription. If you want to know a quick insight into my bio, I graduated from VIT Vellore and did my postgrad from IIT Gandhinagar in Gujarat. And it has been a very amazing journey. Sometimes during my sessions, I'll try to give you all a quick brief of all the amazingness I have experienced in my college life and beyond. So let's begin, right? Let's go ahead. So I hope these course timings are visible to you all. On the Unacademy platform, every day from 4 to 5, I take classes for HSC class 12th and 5 to 6 for HSC class 11th, 5:15 to 6:15 rather, to be precise. 5:15 to 6:15 classes for HSC class 11 and 4 to 5 for HSC class 12 if you are subscribing to the Plus platform. And on the TTS days, I generally try to offer on the TTS 4 to 5 and 5:15 to 6:15 classes for HSC 11th as well as HSC 12th. Right? Okay. Now coming to the next slide. Okay, right, here is a quick insight into my Telegram channel, which is t.me Khushwant Fatnani HSC. Note this down with you or maybe take a screenshot if you want. So on what is the purpose of the Telegram channel? Suppose I am organizing any class for all of you, any special class, any YouTube class. So I will try to put the link in that Telegram channel as well as the timing and the topic, so that you all can accordingly come and attend the class. And generally special classes are free of cost. Generally special classes which we organize on the Unacademy platform are free, and anybody and everybody can attend the same, just like the YouTube classes. Just that these classes are held on the YouTube platform. Let's go ahead. Okay, so what are we going to study today? Today we are going to talk about free body diagrams. Let's begin. So what is a free body diagram, right? One by one, let us read it and talk more about it. Suppose I am drawing a rectangle. Suppose I draw a rectangle. Okay. Say a box. So any free body diagram tries to tell
what are all the forces acting on that body. So here suppose I'm drawing a box which is kept on a table. Say here we have a table, right? Say this is a table on which this box is kept. This is a table and this is some weight or some object which is kept on the table. Now any free body diagram FBD tells you what are all the forces acting on this body. So free body diagram tells all the forces acting on the body. Remember, I'm saying acting on the body. Forces acting on the body. Right? Clear? 1 point. Any free body diagram represents the forces acting on the body. Now, just 1 minute. So, I'll try to adjust the size of my picture so that you all are able to very clearly see the code also. Okay. Let's get back to it. So I hope now the picture is clearly visible as well as the code. So anybody, right? So KF Live, anybody who sees this video and would like to subscribe to the Unacademy platform, you can use my code KF Maha or KF Live. Here is the code. KF Maha or KF Live. This KF Live as well as KF Maha. Right? So what is the advantage of the code? You get a 10% off, right? But please remember everyone that whenever you make use of money, make very wise use of it. Always value your hard-earned money of your parents, right? So that is one thing very, very important. Okay. Everybody clear with this? Suppose an object is kept on a surface and I want to draw the free body diagram. So what are the different types of free body diagrams that can be, as well as what are the different types of forces that can act on an object? Let us read that. Once you all are done with this page, let me know. Let's just say a yes. Hello sir, we got it sir. So that we can move to the next screen. Yes everybody. Done writing this? Okay. Let's go to the next page. Now write this down. There are different types of forces that we'll talk about. There are different types of forces that we'll talk about. The types of forces. Generally, there are different ways of defining. Suppose I am talking it on the basis of the fact whether the force is pulling or pushing. Sir, pulling or pushing? How come? Okay. See, suppose, let us take this in the form of an arrow. 1, 2. Okay. Arrow number 1. This is arrow number 2. Now, suppose I say that type of forces are pushing in nature. The other type of forces are pulling in nature. What are they, sir? Can you give an example and tell? Sure. So pulling forces are the ones which pull the object towards them. Two examples are tension. Sir, how come? Can you give an example? Sure. Say a situation where there is a ceiling from the top of which we have a rope, and with this rope attached is a small ball like this, a small bob. So tension is the force that acts in the rope because of the bob. I repeat, tension is the force that acts in the rope because of the bob, and I say that this tension is T. We are saying that this tension is T. Suppose. So this tension is a force which tries to pull the bob towards the rope. Pulling. It's pulling the bob towards itself. Tension is pulling the bob towards itself. Similarly, one more pulling force is weight. We all know that weight is equal to mg, correct? Weight is equal to mg. So one more force is weight or mg. This is also pulling in nature. And we all know that where does weight act? Towards the Earth's surface. So one more force acting on the small bob which is connected to a string as shown is mg, and mg is also a pulling force. So the Earth is trying to pull the bob towards itself and tension is trying to pull the bob above itself. Correct? This point is clear everyone? Right? Okay.
Now pushing forces. Now there are different types of pushing forces also. Cool. So suppose I am talking about normal reaction. Suppose I am talking about normal reaction. Now what is a normal reaction? Normal reaction is a pushing force. Suppose I'll draw a box here, right? Suppose I'll draw a box here which is kept on the ground. As we have just taken the example, let's do that again. Now for this box, what is the force with which the ground is pushing the box perpendicular to the surface? Perpendicular to the surface. That force is called as pushing force. Have a look here, everyone. So that pushing force is called as normal reaction. So normal reaction is that force by which any surface pushes the other objects which are kept on that surface. I repeat, any surface pushes the object with a force perpendicular to the surface, and that force is called as normal reaction, right? So we have understood about different kinds of forces. First I taught you that what is free body diagram. Any diagram in which all the forces acting on the body are represented. But for that you will ask me that, sir, what are the different types of forces? Sir, what are the different types of forces? The different types. You would ask me that, sir, what are the different types of forces? Right? So those different types of forces are being represented on the next page. Write this down, everyone. Once you are done completing, let me know. Done? Then there is one more force which is called spring force. Spring force comes under both the categories. It is pushing as well as pulling in nature. I will tell you how. Right? First everybody get going with this. Normal reaction, tension, weight, then we are talking about spring force. Okay, done? Done? Okay. Now let us go to next page. Okay. So here, let us say I have a box which is kept on the ground and you need to draw the free body diagram of this box. Here is the box. You are being told the mass of the block is equal to 6 kg. The mass of the block is equal to 6 kg. Take acceleration due to gravity as 10 meter per second square. Take acceleration due to gravity as 10 meter per second square. Mass of the block is being given as 5 kg. Now you are supposed to find out what is the or what are the different free body diagrams. Draw different free body diagrams, or just draw different forces of free body diagram, FBD. A very simple example. How will you do it? You will represent all the forces acting on this block. Say, here I represent the block. Here I represent the block. Now, 1 is the weight, of course, we just learned, acting downwards. Let's show that. So 1 is the weight downwards. What about the second one? Second is the normal reaction acting by the ground upwards, because normal reaction is a pushing force. See, so the ground is pushing the object upwards. Remember, no? That normal reaction is a pushing force. Normal reaction is a pushing force. This one. Whereas tension and weight are pulling forces. Tension and weight are pulling forces. Clear, everybody? Let us take more examples then. So normal reaction acts upwards on the body like this, N, whereas the weight of the body acts downwards like this, mg. Easy to understand now? Write this down in a copy. A very simple example. And this weight mg and this weight mg can also be written as m is given as 6 and g is given as 10. So 60 Newton. 60 Newton. 60 Newton force is acting downwards and n is acting upwards. Because the net force is 0. So although it is not asked, but just for your information, whenever net force on the object is 0, you can write the net upward forces is equal to the net downward forces, and therefore n is equal to 60 Newton.
N is equal to 60 Newton. Point clear, everyone? Any doubts anywhere, feel free to shoot. Right? Okay, great. Let's go to the next slide if this is clear. I'll wait for 10 more seconds until you all note this down. Right? Okay, so let us take one more question. Let us take one more question. Now, again that Bob question. But now a little different from what we had taken it initially. Suppose you have a ceiling, and from the ceiling is a rope, and then two boxes attached like this. One more rope and then one more box. One more rope and one more box. This is M and say this is 3M. The masses are M and 3M respectively. Now that the masses are M and 3M respectively, you are being told if the tension in the first rope is T1 and tension in the second rope is T2, find out the ratio of T1 is to T2. Find out the ratio of T1 is to T2. Clear? Option clear? Your options are, the question is clear, right? Options are A, B, C and D. Here are your set of answers. So 4 is to 1, 1 is to 3, 4 is to 3, or none of the above. Or none of the above. Everybody get going. Give your answers quickly. Yes, keep the answers coming on the live comments chat or the live chat option. Everybody get going. And I know that you all can do it. Yes, try. Let me know once you all are done, dear all. Right, so just seeing your comments. Yes, get going. Done, everybody? Should we get going? Okay, let us see. So one by one, make the free body diagrams. Say we are making the free body diagram of M. Say we are making free body diagram of mass M. What will all forces be? One will be tension, of course, T1. But what about T2? What kind of force is tension we just read? Tension is a pulling force. It pulls the object towards itself. So the upward rope tension will pull M upwards, whereas the lower rope tension T2 will pull the object downwards. T1 will pull the object upwards, whereas T2 will pull the object downwards. Right? Point clear, everybody? Okay. What about this third one? What about this 3M? And is there any other force, by the way, on this object? There is one more force. Which one force? Always on any object, there is a weight acting downwards. Yes, there is a weight acting downwards like this. So there is one more force, which is weight or mg acting downwards, because the mass is m value is m1. Clear? Similarly, for the next one, the next block, let us draw that also.
what are the forces acting on this? What are the forces acting on this? Now one is, of course, for this 3M block, one is the tension T2, it is a pulling force, it is pulling the object upwards, and the other is the weight. What is the mass? 3M. So weight will be 3mg. Right? Take this down. Now, because we need to find out the ratio of tensions, and we just learned in last question, whenever net force is 0, net upward force is equal to net downward force. Yes, correct. So we can do that. So let us do it. So here also on this object, net upward is equal to net downward force. Let's do that. So you'll have T1 is equal to, what are the downward forces acting? Mg and T2. So is equal to mg plus T2. Similarly, from this object, from the free body diagram of the second mass, you will have upward T2 is equal to downward 3mg. So you can write T2 is equal to 3mg. Yes, correct. Let us substitute 3mg here instead of T2. So you will get T1 is equal to mg plus 3mg, which is 4mg. Right? Now what is asked in the question? T1 is to T2. T1 is to T2. Now T1 is to T2 means T1 by T2. Easy. So T1 value is 3mg, whereas T2 value is 4mg. T1 value is 3mg. T1 value is 4mg, whereas T2 value is 3mg. Put that here. So you'll get the answer as 4 is to 3. Should I re-explain it? So your option is option number C. Let us see how did we do it. तो सबसे पहले क्या करना है? First thing that you have to do is write the or establish that figure there first of all. Establish that figure there first of all. Now on that figure or on that diagram, draw all the forces acting on it. So as you can see that here, here there is one force, here there is one force, or which is mg acting downwards. Another one is T2. Tension T2 is pulling the object downwards. Next is T1, which is pulling that object upwards. Correct? Then on this you will have second block. On this T2 is acting upwards, whereas 3mg is acting downwards. Now we just learned that in the last slide that net upward force is equal to net downward force whenever net tension is 0. Correct? Same logic you put to use in this question also. Upward T2 and downward 3mg, equate them. You will get T2 is equal to 3mg, and for this you will have upward T1 is equal to downward mg plus T2. T2 is 3mg, substitute it here, T1 will be 4mg. Correct? Take the ratio. What is the answer coming? 4 is to 3. Easy to understand. If there are any doubts anywhere, just shoot. I am seeing my eye, keeping my eye on the live chat section. So if you think that at any point of time you have occurred with or there is some doubt in your mind, पूछो, एकदम खुल के पूछो, है ना? कोई भी ऐसा मन में ये मत सोचना कि अरे लोग क्या सोचेंगे. Doesn't matter man, what others think doesn't matter. You go ahead with your query and ask. तो हमने आज क्या क्या सीखा, राइट? टुडे वी आर रीडिंग अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम्स. हमने कहा कि फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स कोई भी ऐसा डायग्राम जो आपको बॉडी पर काम करने वाले सभी फोर्सेस के बारे में बताता है. अ फ्री बॉडी डायग्राम टेल्स अबाउट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट body. It is of two types. One are the pushing forces, others the forces are of two types, pushing and pulling. Now under the category of the pushing forces is the normal reaction, then in the category of pulling forces are tension and weight. मतलब जो force आपको अपनी ओर खींचे that is pulling, जो force आपको दूसरी ओर धक्का दे वो हो गया pushing. कूल. स्प्रिंग फोर्स जो है वो दोनों कैटेगरीज में आ जाता है, पुशिंग भी एज वेल एज पुलिंग भी. ये छोटा छोटा नॉलेज होगा ना आपके पास तो आप देखोगे आप अपने आप ही उस सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे. करेक्ट. तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया. फॉर एग्जांपल अ ब्लॉक इज ऑन अ सरफेस. तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन देखो कैसा फोर्स था, पुशिंग था. तो ग्राउंड आपको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है. और देखो वेट वाज mg. सो वेट इज द फोर्स विथ विच द ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड डाउनवर्ड्स बाय द अर्थ. Correct. Now let us take more examples. So suppose for this case you had masses m and 3m, right? Masses m and 3m. Now for these masses m and 3m, abhi the tension T1 was the
weight force acting upwards because pulling force, ये tension T2 in the second rope was acting downwards. उसी तरह से यहाँ पे mg was acting downwards on the block of mass m. For the block of mass 3m, 3mg downwards, जबकि tension T2 upwards. क्यों? क्योंकि tension हमेशा पुल करेगा, इस वाले ब्लॉक को नीचे पुल करेगा, इस वाले ब्लॉक को ऊपर पुल करेगा. सिंपल लॉजिक एकदम. इज दिस क्लियर एवरीवन? कहीं कोई डाउट आए, कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो, एकदम खुल के पूछो. येस एवरीबॉडी, रेडी? क्लियर एकदम अच्छे से? राइट. लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज. सपोज नाउ यू हैव वन मोर क्वेश्चन. नाउ यू हैव वन मोर क्वेश्चन. लेट अस सी नाउ आर वी एबल टू डू दिस और नॉट, है ना? सपोज नाउ वी हैव this way one bob here, one more bob, so one more rope. Let's draw one more rope. अभी ये एक rope, ठीक है? One more rope we'll draw. Let's take one more rope, ऐसा. Now there are three ropes and there are different masses also attached in the question. This is 3 kg, this is 6 kg, whereas this is 9 kg respectively. 3 kg, 6 kg और 9 kg respectively. आपको कहा जाता है tension in this one is T1, tension is this is T2, tension here is T3. Find out the ratio of T1 is to T2 is to T3. T1 is to T2 is to T3. Everybody get going. Yes, and I know that you all can do it. Come on, try. You all can do it. Yes. Should I give the options? Ready for the options, everybody? Then let's take your queries in the comment section. Option number A is 3 is to 5 is to 6. 3 is to 5 is to 6. Option number B is 6 is to 5 is to 3. Then option number C is 3 is to 6 is to 9, and option number D is none of the above. None of the above. Everybody get going. Yes. Try. A very, very simple and easy question. Keep your answers. Let your answers keep coming in the comment section, right? Yes. Live comment section. Feel free to put your answers. And those students who are watching this for the first time, here is my code, which is KF Live. Here is my code KF Live in order to get a discount of 10% on your subscription of Unacademy. You can use this code KF Live, right? Or there is one more code KF Maha. KF Maha, Khushwant Fatnani, Maharashtra. Easy everybody? Clear? Let's try then. Give me a quick thumbs up when you all are ready. Everyone. Yes, get going. Superb. Superb. Ready? Ready. Okay. Now for this one, right? Let's draw the free body diagram. So one will be, of course, the tension acting in the upwards direction. So tension T acting up, T1 upwards. What about tension T2? What about tension T2? See, T1 will of course act in the upward direction. Why upward, sir? Because tension is a pulling force. वो खींचता है अपनी तरफ. तो ऊपर वाली string इस 3 को अपनी ओर खींचेगी. It will pull the string towards itself. So this is T1. This is T1. Now, the downward force is T2. Correct? The downward force is T2. Why? Because ये नीचे वाली string 3 kg को अपनी ओर खींचेगी. Correct, sir? Okay. What about the weight? वो भी काम करेगा, sir. The weight will also act, sir. So let us make the weight also act downward, in the downward direction. ऐसा. What will be the weight? Weight होता है m into g. So इसका mass दिया हुआ है 3 और m दिया हुआ है 3. So we'll have 3g, right, acting in the downward direction. Let's write that. 3g acting in the downward direction. What about the second mass? So this was the yellow color one, you know, this one, right? Let us take the next one.
the white one, second one, which is the 6 kg mass. Let us draw the free body diagram. इस पे कौन कौन से forces काम कर रहे हैं? So on this also you will see that one is the tension T2 upwards, the other will be tension T3 downwards, right? This time there are two different strings, so we'll take two different tensions. याद रखो जितनी ज़्यादा string होगी ना उतने ज़्यादा आपको tension लेने हैं, ठीक है? In every string take separate tension. ये logic है इस question का. Write that if you want, है ना? Every string separate tension. You can write this here, separate string, separate tension. Separate string, separate tension. Right? Written this down. Everybody get going. है ना? Okay. Now, what will other forces be? One will be the T2 upwards. Another will be T3 in the downward direction. Right? So let's write that. This T3 will be in the downward direction. Correct? What are the other forces? The weight of the object. Ah, sir, weight. Weight also acts. Don't forget about weight. So in the downward direction you will have weight of the object 6g. Easy. Let's draw the third diagram, the blue one. What are the forces acting? One is the tension T3 upwards because it is a pulling force, and second is 9g acting downwards direction. 9g acting in the downward direction. Easy to understand everyone, है ना? Now you have drawn all the free body diagrams. You have drawn the free body diagram of 3 kg, 6 kg and 9 kg. अब क्या काम है अपना? अब क्या करना है? Next step is to balance the forces. हमने अभी भी पढ़ा ना पिछले एक दो स्लाइड पहले that ये जब हमने सेकेंड वाला ये वाला क्वेश्चन बनाया उसके पहले द फर्स्ट क्वेश्चन कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स ही काम ना करे, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन यू विल से दैट द नेट अपवर्ड फोर्स एंड द नेट डाउनवर्ड फोर्स आर इक्वल. ये सिंपल सा लॉजिक आपको इस क्वेश्चन में भी लगाना है. जब आपके पास 3 kg, 6 kg और 9 kg के फ्री बॉडी डायग्राम आ गए, आपका काम है कि इन तीनों के लिए आपको ये नेट अपवर्ड और नेट डाउनवर्ड लगाना है. तो एक एक करके लगाते जाते हैं, ठीक है? ये पहला वाला, दिस इज दूसरा वाला एंड दिस इज तीसरा वाला. इन तीनों में चलो ये चीज लगाते हैं, आपको देखो आंसर झटाझट फटाफट आ जाएगा. दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. ठीक, फर्स्ट वन. अभी इसमें आप देखो ऊपर टेंशन T1 इज एक्टिंग, नीचे कौन है? T2 एंड 3G. सो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 3G. यहाँ देखेंगे एवरीबॉडी द T2 फोर्स इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन सेकेंड वन में, और नीचे काम कर रहा है 6G प्लस T3, राइट? 6G प्लस T3. देन अगला देखो दिस वन, इसमें T3 इज एक्टिंग अपवर्ड्स एंड 9G इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. इजी टू अंडरस्टैंड. देखो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए क्या हो रहा है. इन दिस वन द T1 फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड्स, T2 एंड 3G आर एक्टिंग डाउनवर्ड्स. इसमें देखो एवरीबॉडी द T2 फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड्स एंड 6G एंड 3G आर एक्टिंग डाउनवर्ड्स. तो हमने लिखा T2 इज इक्वल टू 6G प्लस T3. वैसे इसमें लिखा T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 3G, और वैसे ही थर्ड वाले में T3 ऊपर नीचे की तरफ 9G. तो आपके पास तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम आ गए, और फ्री बॉडी डायग्राम से यू विल बी एबल टू कैलकुलेट T1, T2, T3. सही कह रहा हूँ? नाउ वन बाय वन सब्सटीट्यूट करते जाओ. सपोज इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया T3 की वैल्यू को, सो यू विल गेट T2 इज इक्वल टू 6G प्लस 9G विच इज़ 15G. वैसे ही T1 कैसा आ जाएगा? T1 विल बी 15G प्लस 3G विच इज़ इक्वल टू 18G, है ना? अभी क्वेश्चन में वी वर आस्क्ड T1 इज टू T2 इज टू T3, है ना? T1 इज टू T2 इज टू T3. So the value for T1 is to T2 is to T3 will be given as 18 is to 15 is to 3. Correct? 18 is to 15 is to 3 or something else. See T3, the value of T3 is 9. So 9. T3 is to 15 is to 9. See, check this, huh? You are the one responsible. If there are any doubts, any place, just feel free to shoot.
right? So once you have that answer, abhi 3 se har jagah you can cancel, right? You're getting the ratio as 18:5, 15:9. Now try and calculate the answer. Yes, you can do it. So your answer should come as 3 se har jagah cancel karo, 6:5:3. This is your answer, everyone. See if you're getting the same. एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब भी कमेंट सेक्शन में आ रहे हो ना तो एकदम लाइव रहो, ताकि आपको जो भी डाउट हो आप उसी समय पूछ सको और एकदम मज़ा भी आएगा यो. ठीक है, श्योर. लेट मी डू वंस यूर डन. क्या किया हमने? फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तीनों का और सीधा सीधा लिख दिया सब कुछ. ठीक, आगे बढ़े अगले सवाल पे. ठीक है, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट you have 3 ropes like this. You have 3 ropes and the ceiling given. This is one side, this is another side, and the ropes are given like this. One, and this is another rope. This is another. There is one more rope like this, ऐसा, attached to the ceiling. The side wall rather. ऐसे side wall से एक और rope attached है. Correct? The angles are given to you. You are given with the angles. This angle is given as 45 degree. This angle is given as 45 degree. Easy? Right? Okay. Then you are being told that this is one point, and here let us take a block. Let us take a block. After this we'll take pulley questions also. Okay, now you are being told that if the mass of this object is m and tension in this string is 60 Newton. Tension in this string is 60 Newton, so find out m. Does it seem difficult? Should I easy the question? If you think that it is not very difficult and you can solve it, give me yes sir, or comment on the live section that sir, this I think we can draw, or this I think we'll try to draw. You just give us some time sir, and then we'll take some time and draw. Yes, everybody get going. You are being given the tension in the upward string. This string is given as 60 Newton, and the mass of this block is m. You have to find out what is the m if the tension in this string is 60 Newton. A very very easy question, and I know that you all can do it. Come on, try. You can do it. Yes, everybody get going. करें कोशिश. ओके, सो देखो अभी ये पॉइंट का ना हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं. हाँ, पॉइंट का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जा सकता है. व्हाट आर द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट? सो सपोज वन फोर्स विल बी टेंशन बिकॉज ऑफ द अपवर्ड स्ट्रिंग, ये वाला जो कि 60 न्यूटन दिया हुआ है. सो 60 न्यूटन इज एक्टिंग अपवर्ड्स. वन टेंशन विल बी एक्टिंग बाय दिस स्ट्रिंग, है ना. वन टेंशन इज एक्टिंग बाय दिस राइटवर्ड स्ट्रिंग, से T नॉट एक्टिंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, और एक फोर्स यहाँ काम कर रहा है लाइक दिस. से दिस इज T, और नीचे वाले फोर्स को सपोज हम लोग T डैश कह देते हैं. और इस ब्लॉक का भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए. वन इज दी, एक यहाँ वाला टेंशन कौन सा है? T डैश, है ना. तो हम लोग ने इसके अज्यूम कर लिए हैं. सपोज यहाँ पे T डैश है, सपोज इसमें T है और इसमें T नॉट. ये हमारा अजम्पशन है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, वी हैव अज्यूम्ड इट. सो दीज आर अज्यूम्ड वैल्यूज. दिस ऑल्सो, दीज आर अज्यूम्ड वैल्यूज. राइट इट डाउन इन योर नोट्स एवरीवन. सो अभी से T naught is the upward force acting on this block and mg is the downward force, है ना. mg is the downward force. इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बन गया. अब क्या करें सर? तो जब भी कभी आपको इस तरह से टेंशन दिया रहता है ना किसी इंक्लाइंड एंगल पर, कोई भी फोर्स अगर इंक्लाइंड एंगल पे दिया हो तो आप उस फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हो. सो आई विल शो दैट टू यू ऑल्सो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. से अभी आपके पास एक फोर्स ऐसा दिया हुआ है. आई ड्रॉ इट हियर. अभी एक फोर्स इस तरह से दिया हुआ है ना. करेक्ट. से दिस एंगल विद द वर्टिकल इज 60 degree, and angle with the horizontal will of course be 30 degree.
राइट. सो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, इस जो भी वेक्टर आपको दिया हुआ है इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं. ये आप कहाँ पढ़ते हो, मैथमेटिकल मेथड सेकेंड चैप्टर जो है ना उसमें पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं. अभी इस फोर्स को सपोज अगर ये जो भी वेक्टर है सपोज आर है ना, सो दिस साइड इसको आप दो अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो. वन इज हॉरिजॉन्टल एंड द अदर इज वर्टिकल कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैसे लिखोगे, वर्टिकल कंपोनेंट को कैसे लिखोगे, दिस साइड, ये वाला जो साइड है दिस वन, दिस विल बी कॉल्ड एज आर cos 60 इन टर्म्स ऑफ 60 डिग्री. ठीक है, वेराज ये वाला साइड कहलाएगा आर sin 60 डिग्री. जनरल डिनोशन देखोगे तो सपोज अगर मैं इस एंगल को, लेट अस टेक दिस एंगल एज अल्फा, ये वाला एंगल विद द वर्टिकल, सपोज ये एंगल इज अल्फा है ना, और आपको ये फोर्स दे दिया टेंशन टी, और ये एंगल आपको दे दिया सपोज बीटा. तो अब इस साइड की भी दो लेंथ हो सकती है और इस वाले साइड की भी दो लेंथ हो सकती है. ये क्या है, बेसिकली आप यहाँ से एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो और देख रहे हो ये वाले साइड की क्या लेंथ बनती है. अगर इस जगह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए तो ये लेंथ क्या होगी, वी आर डिटरमाइनिंग. सिमिलरली वी आर ऑल्सो डिटरमाइनिंग ये वाले साइड की लेंथ क्या होगी, दिस लेंथ. राइट, इजी टू अंडरस्टैंड. तो यू विल हैव दिस साइड लेंथ विल बी टी कॉस अल्फा लिख सकते हो या तो वन वे, या यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज बीटा के टर्म्स में टी साइन बीटा. देखो टी कॉस अल्फा या टी साइन बीटा. वैसे ही इस साइड को भी दो तरीके से लिखा जा सकता है. आई री राइट इफ यू वांट, है ना, टी कॉस अल्फा, या यू कैन ऑल्सो राइट दिस ये वाले साइड का लेंथ एज टी साइन बीटा. उसी तरह से इस साइड को आप क्या लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ बीटा आप लिखोगे टी कॉस बीटा और ये वाला हो जाएगा टी साइन बीटा. राइट, देखो टी कॉस बीटा, या इसी को आप लिख सकते हो टी साइन अल्फा. शुड आई रिपीट, देखो अभी अल्फा के टर्म्स में करना है ना तो बीटा को हटा दो, सिर्फ अल्फा देखो. तो अल्फा के टर्म्स में टी की वजह से जहां पर अल्फा है वहां टी कॉस अल्फा, दूसरे साइड पर टी साइन बीटा, टी साइन अल्फा. ठीक, और अगर बीटा के टर्म्स में करना है तो अल्फा को हटा दो, एक स्ट्राइक ऑफ से अल्फा को हटा दो. अभी सिर्फ बीटा को देखो, तो जिस साइड पर बी है वहां टी कॉस बीटा, जिस साइड पर अल्फा है वहां पर टी साइन, जिस साइड पर बीटा है वहां टी कॉस बीटा, दूसरे वाले साइड पर टी साइन बीटा इन टर्म्स ऑफ बीटा. इजी, जहां पर जो है उसका कॉस, अगर सपोज यहाँ पर बीटा है तो यहाँ टी कॉस बीटा मिलेगा, यहाँ अल्फा है तो यहाँ पे टी कॉस अल्फा मिलेगा. ऐसा जिस जगह पर भी आपके पास जो एंगल है उसका कॉस उस साइड में जाता है. ये बात क्लियर हो रही है. इस साइड की लेंथ निकाल रहे हैं हम, ये वाले साइड की. अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो ऐसा, यू कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ दिस साइड. इसको कहते हैं वेक्टर्स को रिजॉल्व करना. दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स लिख लो एवरीबॉडी अपने पास. राइट, अभी यही काम हमें इस क्वेश्चन में भी करना है. देखो यहाँ पर जो टी है, अब ये दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगा. ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर 30 डिग्री नहीं, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ था, 45 डिग्री दिया हुआ था, तो इसको 45 ही लिखते हैं. तो लेट अस रब दिस पार्ट, है ना. सो दिस वाज गिवन एज 45 डिग्री, है ना. तो आप क्या करोगे, इस t को अपन स्प्लिट कर रहे हैं. वन पार्ट हो जाएगा t cos 45 ऊपर, है ना, और t इस तरफ sin 45. उसी तरह से ये t नॉट कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पर t नॉट एंड डाउनवर्ड फोर्स विल बी t डैश. ठीक है. नाउ अभी वी हैव let us we have all the forces acting, और ऊपर तो 60 काम कर ही रहा है ना, वो 60 तो काम कर ही रहा है. और ये टी डैश, ये जो यहाँ पर दिस इज टी नॉट, राइट. अच्छा, तो नहीं, यहाँ पे अपन ने चेंज करना है एक छोटा सा एवरीवन. ये अपन ने टी नॉट लिया है ना, तो यू कैन राइट दिस एज टी नॉट.
टी नॉट, है ना, और इसको हमने टी डैश लिया है, लेट्स लाइक दैट, टी डैश। यहाँ से देख रहे हो, देखो ये टी डैश है, ये वाला टी नॉट है, एंड दिस इज टी, थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है, रेडी, क्लियर। तो अभी एक बार दोबारा देखो हमने क्या किया, जो टी काम कर रहा था 45 डिग्री के एंगल पे, उसको दो रिजोल्यूशंस में तोड़ दिया, एक हो गया ऊपर की तरफ टी कॉस 45, एक हो गया लेफ्ट की तरफ टी साइन 45, ठीक है। वंस यू हैव दीज वैल्यूज, ऑल दैट यू हैव टू डू द सेम लॉजिक जो आपने पहले अप्लाई किया था, है ना, इसको टी डैश ले लो, ये इसमें अपन ने टी डैश लिया, राइट, तो इसे भी टी डैश ले लो, ठीक है, रेडी, ओके। अब क्या करोगे, यू विल राइट ऊपर की तरफ जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, उनको लिख लो। सो यू विल हैव ऊपर की तरफ काम करने वाले फोर्सेस टी कॉस 45 है ना, टी कॉस 45 प्लस 60 न्यूटन इज इक्वल टू नीचे की तरफ जो टी डैश है, और टी डैश खुद कैसे इक्वल होगा, इक्वल टू एम जी, है ना, तो इज इक्वल टू टी डैश, जो कि आप बाद में लिखोगे इक्वल टू एम जी। और वैसे ही जो यहाँ राइट हैंड साइड की जो वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन बन रही है, ये हो गया वर्टिकल, सॉरी जो हॉरिजॉन्टल साइड की इक्वेशन बन रही है वो क्या हो जाएगी, बोलो, टी साइन 45 इज इक्वल टू टी। क्या हो रहा है, लॉजिक समझना है कि अपन ने x डायरेक्शन में नेट फोर्स को राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड इक्वल किया है, और y डायरेक्शन में नेट फोर्स को राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड इक्वल किया है। ऊपर की तरफ t cos 45 एंड 60 इज इक्वल टू नीचे की तरफ का t डैश, ठीक। अब t डैश की वैल्यू mg के इक्वल है, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, है ना, ये जो है इट विल कम फ्रॉम ओवर हियर, सो लेट्स पुट दैट, सो यू विल हैव t cos 45 यानी कि t बाई रूट 2 प्लस 60 इज इक्वल टू टी डैश, वे टी डैश इज एम जी होल, अभी नीचे यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, टी साइन 45 इज इक्वल टू, और टी बाई रूट 2 इज इक्वल टू टी नॉट, करेक्ट। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली टेंशन निकाल सकते हैं, है ना, क्या हो जाएगा टेंशन बताओ, वी विल गेट टेंशन टी इज इक्वल टू, और हम लोगों को एम जी निकालना है, सपोज एम, तो क्या एम टी के टर्म्स में आ जाएगा, देखो m will be equal to, राइट, देखो क्या आ जाएगा, m will be equal to t by रूट 2 प्लस 60 बाई g, राइट, प्लस 60 बाई g, देखो यहाँ से g को नीचे ले जाओ तो m आ जाएगा। सपोज अगर मैंने क्वेश्चन में ये t भी आपको दे दिया होता 30 न्यूटन का, t भी क्या करता, सपोज मैं आपको दे देता, या 30 रूट 2 दे देता सपोज, तो क्या निकाल लेते हैं आंसर, देखो कर सकते हो, ट्राई करो एवरीवन, यस, गेट गोइंग, नेक्स्ट पेज पे करें, ये वैल्यू पहले यहाँ तक लिख लो एवरीबॉडी, गेट गोइंग, यस, पहले यहाँ तक लिख लीजिए एवरीवन, कोई डाउट हो ज़रूर पूछो, ठीक है, यस, आस्क मी इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर, जो आप पूछना चाहते हो एकदम खुल के बेझिझक बिंदास पूछो, यस एवरीवन। Done writing? Okay, so now let us write this equation we got. Add a page, so we just got t dash is equal to, on the last page, t dash is equal to t, sorry, instead of t dash let us talk about m, no, so let us talk about m, let's write this again, so we have m is equal to the value is coming as t by root 2 plus 60 whole divided by g, right, so let's put that whole divided by g, or you can also put this here, correct. So now t by root 2, so t value is suppose given in the question as 30 root 2, so you will have 30
root 2 divided by root 2 plus 60 whole divided by 10. Okay, therefore root 2 and root 2 will get cancelled, and then 30 plus 60 is equal to 90 divided by 10. Therefore you have 9 kgs is the answer. 9 kgs is the answer. How did we do it? Is it clear to each one of you? If you think that there is a doubt you want to ask, please feel free. Yes, please feel free. What did we do? In this question, it was given to us that there are different strings. Suppose the tension in this string as well as this string were given as 60 as well as 30 root 2 respectively. You were given with the angle and the masses. You were supposed to find out that what is the mass of this block. अभी इस ब्लॉक का मास निकालने का हमने क्या बोला तरीका? हमने बोला कि तरीका ये है कि आप सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फिगर, एंड देन लेटर सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज, लेटर सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर टू गेट योर आंसर. ठीक, करेक्ट, राइट, क्लियर? कोई डाउट, कोई शंका, कुछ पूछना हो, फील फ्री. ओके, अगर क्लियर हो तो देखो एक बार देख लेते हैं हमने शुरू से आज क्या क्या देखा. Right, so once again starting off with a quick revision of the entire PPT. So my name is Khushwant Fatnani. As you can see on the screen, here is a quick insight into my bio on Unacademy. So I have been teaching to the students on different platforms, and here right now on Unacademy I'm available as an educator for HSC class 11th and 12th. Today we started, so here are the quick timings of my HSC 11th as well as HSC class 12th. The classes are held on Monday, Wednesday, Friday from 4 to 5 for class 12th and 5:15 to 6:15 for class 11th. On TTS also I take batches. These are practice classes. These are free and live classes which anybody can come and attend, right, on the Unacademy platform. Then here is a quick insight into my Telegram channel, which is Khushwant Fatnani HSC. I repeat, Khushwant Fatnani HSC. You can use the Telegram channel in order to get the links to the special free live classes or the regular classes which I am organizing for you all. I keep putting the links so that you all will be able to connect with me and ask your queries, or maybe on the Telegram channel what will happen is, suppose if any student is attending for the first time or he doesn't know where is the link, you can get the links on this one. Correct? Now today we were looking to study and understand what are free body diagrams. One by one हम लोग free body diagrams को समझते गए. पहला टॉपिक इज व्हाट इज अ फ्री बॉडी डायग्राम. अभी ना फ्री बॉडी डायग्राम मतलब हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ऑन एनी ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग. फिर हमारा अगला पर्पस क्या था? फिर हमने देखा कि कितने तरह के फोर्सेस हो सकते हैं, पुलिंग या पुशिंग. पुलिंग फोर्सेस में आ जाते हैं टेंशन और वेट, और पुशिंग फोर्सेस में आ जाता है नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, फिर आगे बढ़ गए हम लोग आफ्टर स्टडिंग दिस. फिर हमने एक एक करके अलग अलग एग्जाम्पल देखे, एक बॉक्स का, फिर एक हमने एग्जाम्पल देखा दो अलग अलग मासेस m और 3m स्ट्रिंग से लगे हुए हैं. स्ट्रिंग में टेंशन का रेशियो क्या होगा, अगर 3 ब्लॉक्स हो गए उनके 3 टेंशन्स हो गए तो रेशियो क्या होगा, है ना. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा. तो ये सारी चीज़ें जो आज अपन ने देखी, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको कहीं पर भी ऐसा लगा, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप यहाँ पर अगर लाइव देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लाइव कमेंट करके पूछ सकते हो. और लगता है कि सर हम तो ये आपका सेशन पूरा सपोज बाद में देख पाए हैं, तो ऐसे स्टेट में क्या करना है, ऐसे स्टेट में आप लोग इन लेक्चर्स के बारे में या यहाँ डायरेक्टली लाइव कमेंट सेक्शन में ना से कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज क्वेरीज, जितना अपन कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, अब आपकी कुछ बैचेस हैं जो शुरू हो चुकी हैं आज से, दैट इज़ 12th of July. तो अगर आज तक आपने अभी तक सपोज Unacademy Plus ट्राई नहीं किया है तो गो ऑन दी Unacademy ऐप एंड ट्राई आउट दीज बैचेस, जिसमें आपको सागर सर, सिमरजीत मैम, गौरव सर, गजानन सर, सुनील सर, राइट, दिगंबर सर, गुणवंत सर, माई सेल्फ ऑल्सो इज टीचिंग ऑन दी बैच, आकाश मदान सर इज टीचिंग, राम सर इज टीचिंग, श्रुति मैम, Dheeraj sir, myself, Vimla ma'am, Rishu sir, we are there in all different languages. So suppose this language is for, this one is for English, my batch is for English, right? Now similarly Uday batch is for Hindi, my batch is the intellect batch which is in English. अभी ऐसे ही Ramanujan batch for class HSC class 11, it is maths by Pawan sir, right?
and these are bridge courses. These are bridge courses for students to get an idea about what it is the entire syllabus all about. उसके बारे में थोड़ा सा आपको ना आइडिया लगने लगता है. अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप आकर अलग अलग तरह के टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल हो सकते हो, और काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ फ्री लाइव टेस्ट सीरीज़ है. मतलब आपको कोई अलग से पेमेंट भी नहीं करना है, आप आकर बस टेस्ट सीरीज़ दीजिए. देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है द टेस्ट सीरीज़ आर फ्री. तो आप आके टेस्ट सीरीज़ दीजिए और एक लेवल समझने की कोशिश कीजिए कि क्या दिस इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू, दिस इज़ द क्वालिटी जो मैं चाहूँगा कि मुझे आगे भी मिले. तो अकॉर्डिंगली अगर आपको क्वालिटी अच्छी लगती है लेक्चर्स की, टेस्ट की, सीरीज़ की, जो अगर आप फ्री टेस्ट अटेंड करते हो ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेड टेस्ट कैसे होते हैं. 1 एंड सेकेंड, आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी है, तो स्पेशल क्लासेस ना अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फ्री है, आपको कोई अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये फ़ायदा है स्पेशल क्लासेस का, राइट. और जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो प्लस का, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है आप लोगों के लिए कि आप ये कोड यूज़ कर सकते हो KF महा. लेकिन याद रखना आपके पेरेंट्स की मनी है तो उसका सही उपयोग करना, गलत उपयोग नहीं करना, राइट. तो अगर लगता है कि आप सब्सक्रिप्शन को यूज़ करोगे तो ही ख़रीदना, राइट. इसको सब्सक्रिप्शन लेने पर यू विल गेट ए 10% डिस्काउंट. और इतना नॉमिनल है जो फ़ी का अमाउंट है जो आपसे पेमेंट लिया जा रहा है, वो इतना नॉमिनल है कि आप बोलोगे ये तो बहुत आराम से पेएबल है ना. So this is all about it, right? Here is the code KFMAHA and you can also use my code KF Live, Khushwant Fatnani Live. ठीक है, ओके. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, समझा दी. आई थिंक हियर वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया तो उसको ज़रूर शेयर करना और लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को डिस्ट्रीब्यूट भी करना. ऐसा बोलते हैं ना, कर भला तो हो भला. इफ़ यू डू गुड टू द वर्ल्ड, गुड विल कम बैक टू यू. इस सकारात्मक थॉट के साथ, विद दिस पॉजिटिव थॉट दैट वॉट एवर वी आर पुटिंग इन, अपना बेस्ट एफर्ट डालते जाओ. आप देखोगे जितना आप अपने तरफ से बेस्ट एफर्ट दोगे चीज़ों में, वो बेस्ट एफर्ट किसी ना किसी फॉर्म में आप तक चलकर वापस ज़रूर आएगा. इस पॉजिटिव थॉट के साथ लेट अस put an end to the session. So this was Khushwant Fatnani and teaching you the entire session on free body diagrams. Let me take an adieu and bid a goodbye to each one of our viewers. Either आपने live देखा या आपने recorded session देखा, right? तो wishing you all a goodbye. Let us catch up soon with the new concept. इस week every day 7 to 8 PM मैं अलग अलग topics लेके आपके सामने आने की कोशिश करूँगा, ठीक है. तो until then, take care. Bye bye guys. This is Khushwant Fatnani signing off. Unacademy, let's crack it.